Hey everyone, so today I'm going to be doing a skincare products unboxing and also try them on for the first time. So it's something I've really been excited to film because I've been seeing these products literally everywhere on the internet, and also I've been seeing amazing reviews everywhere. People seem to absolutely love them. So naturally I wanted to try them on for myself and see if they actually live up to all the hype. So let's do it together. So I'm actually a kind of person who ever hardly goes to the parlor or salon for skincare. The last time I got a massage or a facial was maybe a year ago. That too was done by my sister-in-law who is a beautician. Otherwise, I love to take care of my skin on my own at home. I love making my own face packs at home using ingredients I already have in my kitchen. So yeah, okay, so the first product is the rice water brightening daily cleanser. Okay, yeah, day. And the next product I ordered was vitamin infused brightening sunscreen SPF. This one. I have another product. Yeah, all I need sunscreen SPF 50. It's a sunscreen. So for the longest time I've been using Cetaphil products, and I feel that it's about time I give another brand a try. So let's see, it's a double shot radiance lift serum. And last but not the least is a golden hour glow serum. Yeah. So these are all the products, and now I can definitely say that the brand has put in a lot of details into packaging. As you can see, they look minimal, premium, and gives that luxury vibe. So I'm excited to try them on. First, let's try the sunscreen. Okay, so the texture feels light. It doesn't feel greasy or heavy on the face, and definitely does not leave a white cast. So my skin feels moisturized, so it feels light on my skin. It is not greasy or heavy at all, and definitely does not leave a white cast, as you can see. Also blends in really well, so I'll continue to use it over the next few weeks and let you know how it performs in the long run. Hey guys, so it's the review time and I'll be very honest with you. तो ये मैंने 2 वीक्स तक लगाया, और मैं फर्स्ट वीक में ही आई ऑलमोस्ट गेव अप, क्योंकि फर्स्ट वीक लगाने के बाद मेरा स्किन जो पूरा टैन होने लग गया था। पूरा मेरा जो नेचुरल टोन है ना, उससे तो एक टोन डार्कर हो रहा था। पर हम सोचे कि ठीक है, आई गिव इट अ फेयर चांस, क्योंकि एक हफ्ता लगा कि जज करना फेयर नहीं है ऑन द प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैंने आई वेंट ऑन टू यूज़ फॉर अनदर वीक, और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक तो मेरा स्किन इतना ज़्यादा डार्क और टैन हो गया था कि मेरा बहन लोग भी मजाक करने लग रहा था ना, क्या दिन भर धूप में खड़ा रहा था क्या बोल के। तो वही है, जैसे कि इंटरनेट में बहुत बड़ा बड़ा क्लेम्स कर रहा था कि ये ग्लास स्किन देता है, बहुत ग्लो कराता है, ब्राइटन करता है। मेरे लिए जस्ट अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ। ये लगाने से पहले स्किन थोड़ा ठीक ठाक ही था, ये शुरू करने के बाद स्किन जो इतना डल और टैन हो गया था, सो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया। एंड तो हमने जो मेरा हस्बैंड को दिया था, एक दूसरा 2 सनस्क्रीन था, तो दूसरा वाला मेरा हस्बैंड को लगाने दिया था, तो उसको भी पसंद नहीं आया है। वो भी बोला है कि उसका स्किन को सूट नहीं कर रहा है। एंड बाद में पता चलता कि इनफैक्ट ये वाला सीरम है ना, तो ये मेरा लास्ट बहन, उन्होंने भी ट्राई किया था, और उसको भी कुछ दिन बाद ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसका स्किन जो टैन हो रहा था। तो ऑब्वियसली हम लोग के लिए ये काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग के लिए कर भी सकता है, आई डोंट नो। तो आप बेशक ट्राई कर सकता है, लेकिन वही है, मेरा रिव्यू यही है कि बिल्कुल काम नहीं किया। तो वही है, 2 वीक्स बाद आई वेंट बैक टू माई फेवरेट सेटाफिल। तो सेटाफिल नेवर डिसअपॉइंट्स, हमेशा ही लगा है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दीज प्रोडक्ट्स. इतना सारा खरीद के रखा है, अभी क्या करेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है. अगर किसी को चाहिए तो बोलो, हम भेज देगा.